Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. So in the meantime, we'll just wait for a couple of minutes before we start off with today's mid-market session. So we'll just wait and we'll start by 12:32. Atul ji saying hi. Champa ji, okay. Balrama ji, good afternoon. Good afternoon to you as well, Balrama ji. Sudhakar ji, good afternoon. Sir, I missed your webinar due to power failure. No problem, Sudhakar ji. I think you can relook at the video again. Not a problem. Kasturi ma'am, good afternoon to you as well. Vinay ji, hi, good afternoon. Ravindran ji, hi. Madan Kumar ji, good afternoon. Murthy ji, good afternoon. Yeah, lackluster market, Sachin ji. Yes, Madhu ji, good afternoon. Palwan ji, good afternoon to you as well. Super. Ramesh ji, hi. Good afternoon. So, Buddha ji, hi. I did relook at the webinar. Oh, great. So great, Sudhakar ji. Thank you. So let us start off with the mid-market session today. So obviously the big news that is coming, I think the big news that we saw yesterday was President Trump threatening even additional tariffs on India. Just because I think what he thinks is we buy oil from Russia and then we sell it in the open market for gains. So for which, President Trump has a problem with. And so he has threatened that he will raise some additional tariffs on India going forward. And there was some, official announcement from the MEA spokesperson as well, saying that, to protect national interest, they'll be, taking up some measures as well going forward. But I have some, really some nice data that I've got for you guys. I hope you all are able to see my Excel. So it's not that US doesn't do any trades with Russia. Obviously, US does trade with Russia, but it's very negligible. So if you look at the US imports from Russia, a couple of things which US imports from Russia is your enriched uranium. So around $596 million, that is from January to May 2025. So that is the total import value from Russia. So enriched uranium, if you see, it's a critical fuel source for American nuclear power plants. And if you look at the other thing that they import is palladium, which is raw palladium. So around $502 million of imports. And this is usually used in catalytic converters. So ये automobile का जो exhaust systems है to reduce harmful emissions. So if you see the total US trade, if you look at Russia versus India versus China, so अगर हम China की बात करें, so US has exported, so this is from Jan to May 2025. So $46.5 billion US had exported to China, and the total imports stood at $148.5 billion. If you look at India, it is around $18.2 billion of exports, whereas they import close to $47.1 billion. And agar hum Russia dekhe, Russia still, it's not that US completely doesn't do any trades with Russia. They do buy uranium and palladium with them as well. And considering the fact that they want us to stop buying oil and military equipments from them, I think that is what the statement has come in yesterday. So if you look at the total US exports to Russia at $0.23 billion, whereas the imports stood at $2.09 billion. But now if you see what's the percentage of total US trade with respect to China, so nearly China accounts for 11% of the total US trade. India accounts for roughly around 3% of the US trade.
Whereas even Russia, it's not that US doesn't do any trade with Russia. Even US trades with Russia, considering they buy palladium and uranium. So Russia contributes a minuscule 0.1%. So we'll have to wait and watch as to how India responds to this, whether we continue to buy oil and military equipments from Russia, or we look at different options from here. I think there's also I think NDA parliamentary meet that is going on today, where all the NDA partners are present. So hopefully we might. I think what I feel is we might have some news coming in the evening here as to how India is going to respond to this tweet. Nevertheless, if we look at the global markets, अगर हम global markets की बात करें, so the US markets closed in the green. So Dow Jones closed around 1.34% higher. S&P 500 was up 1.47%. Nasdaq was up 1.95%. So the US markets closed in green. If you look at Dow futures is up 81 points or 0.18% higher. So I think US markets are expected to continue their positive momentum. If we look at the Europe market, so Germany is up 1.4%, UK is up 0.6%, France is up 0.38%. If you look at the Euro Stocks index, that is also up 0.35%. So even the Europe markets were trading in the green. If you look at the Asian markets, all the Asian markets are in green except our markets. So if you look at Nikkei is up 0.6%, Hang Seng is up 0.62%. Shanghai is 0.89. Kospi is again the best performing Asian index, 1.6% higher. Whereas if you look at Nifty and Sensex, both are down in the range of 0.3 to 0.33%. Now, if you look at this chart carefully, guys, wherein we compare the global indices, almost all the indices have recovered. So you can see Shanghai is up, Kospi is moving up, Hang Seng is moving up, Dow Jones, Euro Stocks Index, Nikkei is moving up. Whereas if you look at our markets, I think from the 23rd of July, we are moving south. So you can see Nifty has been the worst performing global index, whereas, China has been the, best performing global index here. So it's not that China doesn't buy anything from Russia. So even China sources oil from Russia as well. But I don't know why, US has a problem with us buying oil from Russia, despite the fact that after 2020, after COVID hit, they were the ones who had encouraged us, to buy oil for, ensuring national security stability. But nevertheless, the deal with China is almost around the corner, whereas our negotiations with US is still going on. But again, no signs of respite for our markets. We are still down. We are the worst performing global index as well. If we look at the macro indicators, अगर हम dollar index देखें, so dollar index took resistance around 9900 and then it fell here. It's at 98.86. So it's nothing substantial that has happened in the dollar index. So as long as it trades below 100, it is not going to worry emerging markets like us. And on the downside, we have a support of around 97 is where the support for DXY is placed. If we look at the US government bonds, 10-year yields, it's at 4.2%. So कल US का jobs data आया, which was, above expectations. So chances are that, Fed, though they didn't go for any rate cuts this time around, but chances are that they might go for Fed cuts they might go for a rate cut in the next meeting. So we have the RBI MPC meet. So we'll have some announcement tomorrow coming in. So largely, I feel RBI might not do anything with the rates. I feel they might keep the rates unchanged, or at the max, they might go for a 25 basis point rate cut. But I feel, considering the uncertainty around tariffs and, how the future 3 to 6 months can pan out, I feel RBI might, keep the interest rates unchanged. So we'll have to wait and watch as to what the RBI does. If you look at the India VIX has been consolidating. So around, 9.8 to 12 is where the zone for India VIX is. So nothing much to worry on the India VIX front. It's been trading flat. If you look at the dollar by rupee, yes, so we had a gap up opening. So dollar appreciated today around 87.98, and we have seen some profit booking here.
In fact, I feel dollar has given a very nice breakout, and if this trend continues, we are not going to see inflows in our markets. So till the time dollar keeps strengthening against the rupee, FIIs are not going to come back to our markets. So this is, one thing that we need to keep an eye on. We need dollar to go below 86, 86.5, 86 level. I think that is where we'll start getting comfort to our markets. If we look at crude oil again, so crude oil, it had gone past the 200-day EMA around 72.677. And I think the crude oil prices have cooled down again now with the support placed at around $67 a barrel. So if we go below 67, I think we'll be slightly well placed. Silver, again, we got a breakout, but silver has kind of given up some gains. So it took support from its 50-day EMA, and there is some signs of recovery that we are seeing from the 50-day EMA levels. Whereas if we look at gold, so silver is at $37.45 an ounce. And if we look at gold again, so there is some buying that we are seeing in gold since last 3 trading sessions. So gold is at $3,369 per ounce. So we are seeing some uptick in gold and silver in the last 3 sessions. The US markets are in positive. The global markets are in positive. It's only the Indian markets that is, currently not doing well. That is largely got to do with the uncertainty around the US, these tariffs announcement that keeps coming in again and again. If you look at the corporate earnings announcement have been, not lived up to the expectations. And all in all, one other factor is if you look at the FII data, FII भी आप देखेंगे, so yesterday they sold around 2,566 crores in the cash market. So you can see, अगर हम 15 जुलाई से ही देखें, so अगर हम total FII की selling देखें cash market में, that is around 41,702 crores, 701 crores. So nearly more over 40,000 crores of selling by the FIIs in the cash market. कहीं भी नहीं लग रहा है कि FIIs short covering भी कर रहे हैं index futures में. अगर आप देखोगे नेट इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रॉम -1,21,000 हैज गॉन टू -1,56,000. लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 8.6% से 9% चल गया है. बट अगेन, सो यस्टरडेज क्लोजिंग वाज 24,723. वी आर स्टिल बिलो दैट, एंड देयर इज again no improvement in the long short ratio. FIIs are in no mood to come back to our Indian markets. I think clearly they are pulling money out of our markets, and I feel they might be putting money in some other emerging markets like maybe Shanghai or Nikkei, considering the fact that the Asian markets, barring our markets, have been doing well, and even the US markets are seeing some uptick in the last couple of weeks or so. There were more advancing counters than the declining counters yesterday, though the market breadth was in the favor of bulls. But again, if you see the overall movement, we are still lacking that momentum that we want to see in our markets. Nifty की बात करें, so right now Nifty is at 24,650. So if you just look at the trend for Nifty here, यहाँ पे जो 30th जून को जो हाई बनाया था 25,669 का, see how Nifty moves. It gives a fall, then it consolidates, then it falls, it consolidates, then it falls, then it consolidates, फिर से fall आया, and then again it is consolidating here. So fall होता है, consolidate होता है, फिर fall होके consolidate होता है, फिर fall होके consolidate होता है. And that is the trend that we've been seeing, where Nifty has been moving in a lower low, lower high formation. But if you see last 3 days, एक NR3 pattern जैसे हम बोल सकते हैं, which is narrow range 3. That is 3 candles से एक narrow range बनते आ रहा है निफ्टी में, and it has been holding on to its 100-day EMA, जो कि ये जो 24,600 जो level है, that is a very strong support level for Nifty. And last 3 days Nifty has been holding on to this 24,600 level. But the moment Nifty goes below 24,600, I think the next most important support for Nifty is placed at the 24,000. So you can see 24,600 has good amount of put writing. I think 24,500, I feel it's going to be a major support for Nifty. अगर निफ्टी गिरेगा तो भी करंट लेवल से आई फील निफ्टी शायद 24,500 के आसपास एक सपोर्ट लेके एक बाउंस देखने की उम्मीद रख सकते हैं 24,500 पर. बट अगर 24,500 टूटता है, आई थिंक इफ वी गो बिलो 24,500, देन आई फील द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज प्लेस्ड एट अराउंड 24,170, 24,200 लेवल्स. So this will be very interesting to watch out कि narrow range के बाद in which way is Nifty going to move.
क्या निफ्टी करंट लेवल से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा या निफ्टी ये जो 3 दिन का जो नैरो रेंज है वहां से हमें ब्रेकडाउन मिलेगा क्या? सो आई थिंक द इमीडिएट लेवल टू वॉच आउट वुड बी 24,600. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सपोर्ट ऑन द डाउन साइड. And below 24,600 we can see 24,500. I feel 24,500 एक strong support है निफ्टी के लिए. But if we break 24,500 then we can see 24,200, 24,170. That is where the 200-day EMA for Nifty is placed at. On the upside, I think we were looking at 25,000 levels on an immediate basis for any chances of a trend reversal. बट ये जो तीनों दिन का जो नैरो रेंज है एटलीस्ट एक 24,770, 24,800 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलना चाहिए. तो जब तक हमें निफ्टी में 24,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है हमें निफ्टी पे 24,800 के ऊपर जब तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है, I think it's better to be aggressively on the long side. I feel the trend is going to be sideways to negative still for Nifty, or maybe intraday movement आपको मिल सकता है, but barring that एक ट्रेंड रिवर्सल सबसे पहले 24,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलना चाहिए, उसके बाद 25,000 क्रॉस करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स हमें दिखने चाहिए डेली चार्ट पर. तो जब तक वो नहीं आता है द ट्रेंड इज गोइंग टू बी साइडवेज टू नेगेटिव. और अगर हम आज का हीट मैप देखें, इफ यू लुक एट द हेवीवेट्स, रिलायंस इज डाउन 1.13%, आईसीआईसीआई बैंक इज डाउन 1.21%, HDFC is down 0.4%, Infi is down 1.15%. It's only Bharti Airtel जो 0.85% ऊपर है. So ये HDFC, ICICI, Reliance, Infosys and Bharti Airtel, ये 5 स्टॉक्स का वेटेज 40% है निफ्टी में. एंड 5 में से जो 4 स्टॉक्स है उसमें वी कैन सी देयर इज हेवी सेलिंग दैट इज गोइंग ऑन, रिलायंस, इन्फी एंड ICICI बैंक. तो जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा निफ्टी में कोई बढ़ने की चांसेस नहीं है. निफ्टी साइडवेज टू फ्लैट ही रहेगा. सो अगर निफ्टी को यहाँ से बढ़ना है तो रिलायंस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल से बाइंग आना चाहिए. जब तक ये 3 स्टॉक्स में बाइंग नहीं आएगा इंट्राडे बेसिस पर, आई डोंट थिंक निफ्टी इज गोइंग टू गो पास द 24,770, 24,800 मार्क. सो दीज आर द 3 टॉप 5 स्टॉक्स का कभी भी आप ध्यान में रखना जब भी आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो. Look at what these heavyweight stocks are doing every day. So this is the level for Nifty. And if we look at Sensex again, तो Sensex की बात करें तो Sensex pretty much similar story है Nifty के जैसे. पिछले 3 दिन अगर हम देखेंगे एक narrow range 3 पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, where the prices have been moving in a narrow range. Again it has been holding on to its 100-day EMA. भले ही निफ्टी 100-day EMA के थोड़ा ऊपर है और Sensex 100-day EMA के एकदम करीब ट्रेड कर रहा है यहाँ पे. बट जो डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट होगा सेंसेक्स के लिए वो होगा 80,450, 80,500. बिकॉज अगर हम ऑप्शन चेन देखें यहाँ पे, अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 8500 में काफी ज्यादा पुट राइटिंग है. सो 8500 इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सेंसेक्स. आज सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी है. तो आई थिंक अभी 8750 चल रहा है, बट अगर 500 के नीचे जाता है सेंसेक्स तो हो सकता है हमें थोड़ा और सेलिंग देखने को मिले सेंसेक्स में, जो 80,000 तक जा सकता है, जहाँ पे उसका 200-day EMA प्लेस्ड है. सो इमीडिएट लेवल टू वॉच आउट इन सेंसेक्स वुड बी 8500, and if it breaks 8500 then we can move towards 200-day EMA which is at 80,000. On the upside again, हमें एटलीस्ट 81,200, 81,300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए सेंसेक्स में. बट अगर हम सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 81,000 स्ट्राइक पर है. और अगर मैं आज की चेंज इन ओआई भी देखूं तो 81,000 में कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं और पुट राइटर्स अपना पोजीशंस को यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि 81,000 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए. अभी सेंसेक्स 80,750 है, तो शायद यहाँ से और 250 पॉइंट ऊपर जाने में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है सेंसेक्स के लिए. तो सेंसेक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है. वैसे अभी के लिए तो दिख नहीं रहा है बिकॉज 81,000 में सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है. अगर कॉल राइटर्स एग्जिट करते 81,000 स्ट्राइक से तो हो सकता है हम 81,000 ब्रेक करके 81,200, 81,300 सेंसेक्स जाते हुए नजर आए. बट जब तक कॉल राइटर्स प्रेजेंट है 81,000 में, तब तक शायद सेंसेक्स 81,000 को पार नहीं कर पाएगा. मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी है. So 81,000 is the level that you need to watch out on an intraday basis on the upside.
वेरएज डाउन साइड में 8500 एक सपोर्ट लेके चल सकते हो। अगेन ट्रेंड जो सेंसेक्स का है जो नेगेटिव टू साइडवेज ही है, डोंट बी अग्रेसिवली ऑन दी लॉन्ग साइड इन सेंसेक्स एज वेल। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, अगर आप सेंसेक्स निफ्टी देखोगे तो 3 दिन से एक रेंज में होल्ड कर रहा है वहां पे। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में हर दिन एक नया लो बनते आ रहा है। So Bank Nifty is relatively looking weaker to both Nifty and Sensex. In fact, एक जस्ट पिछले 2 हफ्ते पहले ही बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले, बट आज बैंक निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले अभी वीक लग रहा है। यहाँ पे 50 डे ईएमए के नीचे चला गया, आप टूवर्ड्स हम 100 डे ईएमए की तरफ बैंक निफ्टी मूव होते हुए नजर आ रहा है। सो अराउंड जो 55,000 का लेवल है, 54,950 55,000, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज वहां पे 100 डे ईएमए प्लेस्ड है। तो अगर हम ऑप्शन चेन देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी का, सो इसमें यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ and let us go to bank nifty and let us see the levels for bank nifty here. तो बैंक निफ्टी के अगर हम देखेंगे तो 55,000 में काफी स्ट्रॉन्ग पुट ओआई है, तो 55,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पे 100 डे ईए में भी प्लेस्ड है बैंक निफ्टी का। एंड ऑन दी अपसाइड हमें एक हायर क्लोज चाहिए। अगर मैं अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करूं, तो अगर आप देखोगे 55,500 में भी भले ही पुट राइटर्स है, बट कॉल राइटर्स का काफी दबाव रहा है आज 55,500 में। सो काफी चांस कम लग रहा है कि हम 55,500 के ऊपर क्लोजिंग दे। अभी तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट दूर है करंट लेवल से, बट आई फील 55,500 में कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 55,500 में काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रही है अब कंपेयर टू पुट राइटिंग। और भले ही पुट राइटर्स ज्यादा है बट कॉल राइटर्स अपना दबाव दिखा रहे हैं यहाँ पे 55,500 पे। तो हो सकता है बैंक निफ्टी का भी जो व्यू है वो साइडवेज टू नेगेटिव ही है। तो तीनों इंडाइसेस में अग्रेसिवली लॉन्ग साइड पर मत रहना अभी। मे बी आप डीप ओटीएम कॉल्स को आप सेल करने को देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा और ऊपर जाके आप सेल करने को देख सकते हो, या कोई क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज जहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा एक साइडवेज या फ्लैट ट्रेंड हम देख सकते हैं, जैसे हम इंडिया विक्स में भी देख रहे हैं, तो ट्रेंड एकदम से फ्लैट है एंड साइडवेज टू नेगेटिव। दिस आप ये है जो आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट आज के सेशन के लिए। जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई नहीं देता डेली चार्ट पर, तब तक अवॉइड बीइंग ऑन दी लॉन्ग साइड इन दी मार्केट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स एंड द की स्टॉक्स टू वॉच आउट। कल के सेशन में हमने देखा कि मेटल सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया था हमें। तो अगर हम मेटल बाय निफ्टी की रेशियो चार्ट देखें, सो कल एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था और आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है मेटल स्पेस में। But despite in this weak market, I think some metal counters are doing well. I think one stock that you can keep in your radar is JSL, Jindal Stainless. जिंडाल स्टेनलेस ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, द प्राइस हैज गॉन अप। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। फिर से अगर 735 के ऊपर इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग मूव, देन चांसेस आर दैट ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है आने वाले दिनों में। एंड अराउंड 700 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और द स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक। The other sector that is doing well is the manufacturing space. Considering there have been calls for Make in India, आप मेक इन इंडिया है, सेल इन इंडिया है, इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करो, काफी इस पे भी पिछले 3-4 दिन से ये चर्चा पे रही है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग भी देखें यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है अब। कल जैसे हमने देखा था ऑटो स्पेस में भी एक आउट परफॉर्मेंस की झलक दिख रही है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला था हमें कल, और आज थोड़ा सा एक छोटा स्मॉल डोजी कैंडल बन रहा है यहाँ पे। सो द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज हियर, और अगर करंट लेवल से एक फॉलो अप मूव आता है तो हीरो मोटोकॉर्प भी आने वाले दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हीरो मोटोकॉर्प 4,460 4,470 ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन करे, बिकॉज अगर ये लेवल के नीचे आ जाएगा तो हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, और आई थिंक द स्टॉक कैन मूव डाउन। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 4,460 4,470 के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प सस्टेन करे। तो मेटल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ये दो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं जो अंडर परफॉर्म कर रहा है एट द करंट लेवल, दैट इज योर ऑयल एंड गैस।
तो अगर हम ऑयल एंड गैस और निफ्टी की रेशियो चार्ट देखें, सो हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस इज करंटली अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी इंडेक्स। एंड अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं ऑयल एंड गैस स्पेस में, जो जिसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, दैट इज महानगर गैस। तो हम महानगर गैस देखें तो बीच में ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से नीचे आके अब वो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है 1290 के आसपास। अगर ये लेवल टूटता है तो ये जा सकता है 1260। अगर वो 1260 भी टूटता है देन वी कैन कम टुवर्ड्स 1230 लेवल। सो महानगर गैस का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है और एक लोअर हाई फॉर्मेशन भी दिख रहा है आपको महानगर गैस में। So oil and gas is one sector that is, currently underperforming, whereas manufacturing and metal sector are the ones that are outperforming here. The couple of other stocks that are doing well and that can have in your radar, one is JSW Energy. JSW Energy अगर हम देखेंगे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था, अब प्राइस वो 200 डे ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। तो अगर ये 545 550 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, तो हो सकता है हमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे इन दी कमिंग डेज। अभी फिलहाल के लिए 200 डे ये में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि 545 जोन्स के आसपास है। बट अगर हम 545 550 के ऊपर जाते हैं, आई थिंक ये हो सकता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक अच्छा मोमेंटम दिखे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 510। वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा जेएसडब्ल्यू के लिए। दी अदर स्टॉक जो कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज रैडिको खैतान। अगर हम रैडिको की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट होके कंसोलिडेशन होके अब यहाँ पे 3 दिन से एक फॉलो अप मूव की कोशिश कर रहा है यहाँ पे स्टॉक। अराउंड अगर आप देखोगे 2940 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है रैडिको खैतान। तो अगर एक 2940 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिलता है, या से एक फॉलो अप मूव मिलता है 2940 के ऊपर, तो हो सकता है रैडिको कैतान में भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे। और ये जो लेवल होगा नीचे 2740 2750, दैट इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर रैडिको कैतान। द अदर स्टॉक दैट इज डूइंग वेल इज जीपीआईएल। अगर हम गोदावरी पावर एंड इस्पात की बात करें यहाँ पे, तो गोदावरी पावर काफी टाइम से एक छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, एक साइडवेज जोन में चल रहा था, यहाँ पे एक छोटे रेंज में मूव कर रहा था। अगर आप देखोगे अराउंड 199 एंड 188 के रेंज में काफी टाइम से था, ऑलमोस्ट 17 जुलाई से। और आज ऐसे लग रहा है कि द प्राइस इज ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट रेंज योर। सो हमें काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये 199 का लेवल्स। अगर ये 199 के लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो हो सकता है हमें जीपीआईएल एटलीस्ट 210 लेवल्स तक जाते हुए नजर आए इन दी शॉर्ट टर्म। एंड द इम्पोर्टेंट सपोर्ट वुड बी अराउंड 187, बिकॉज ये 187 के नीचे चला गया तो ये ट्रेंड फिर उल्टा पड़ जाएगा इस पे। सो 187 का स्टॉप लॉस और इसका क्लोजिंग 199 के ऊपर मिले, सो गोदावरी पावर कैन डू वेल इन द नियर टर्म। दी अदर स्टॉक जो हमने कल के लाइव मार्केट में भी देखा था, दैट इज यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो अगर हम यथार्थ की बात करें तो काफी टाइम से एक रेंज में घूम रहा है यहाँ पे यथार्थ। यहाँ पे हमने देखा कि रेंज में घूम रहा था, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से एक नए रेंज पे घूम रहा है यहाँ पे। सो अगर हमें ऊपर 655 660 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, considering the fact that it is trading above its key moving averages, if we get a strong close above 660 670, then chances are that even Yathat Hospital can do well in the coming days. And the other stock from the auto space that is trading near its resistance is TVS Motors. तो अगर हम TVS Motors की बात करें यहाँ पे, तो ये एक प्रीवियस हाई है। अब ये कोशिश कर रहा है, पिछले 3 दिन से वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे बन रहे टीवीएस मोटर्स में। RSI भी 60 के ऊपर है, ADX थोड़ा सा फ्लैट है। अगर ADX भी ऊपर मूव होना शुरू हो गया और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें मिल गया 2965 2975 के ऊपर, तो हो सकता है हमें टीवीएस मोटर में भी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे इन दी कमिंग डेज। सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में मेटल मैन्युफैक्चरिंग, अंडर परफॉर्मिंग में ऑयल एंड गैस। So these are the counters that you can keep in your radar. So that was all about today's bid market sessions. If you have any doubts, any queries, do let me know in the chat box, and we'll start up with our question and answer session now. Anuradha ma'am is asking for Coal India entry level.
अवॉइड कोल इंडिया अनुराधा जी। अगर आप देखोगे प्राइस एक लोअर हाई फॉर्मेशन में मूव कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है यहाँ पे। भले ही 370 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कोल इंडिया के लिए, बट थोड़ा सा इसको हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट। जब तक ये 390 395 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इट्स बेटर टू अवॉइड अनुराधा जी। अगर आपके पास ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हो तो 370 का एसएल से आप होल्ड कर सकते हो। अगर 370 के नीचे जाता है तो इट्स बेटर टू एग्जिट। आईसीआईसीआई बैंक, सुधाकर जी, सपोर्ट लेवल फॉर आईसीआईसीआई बैंक कैन सी, ये जो आई थिंक 1425, देयर इज वन गैप हियर, so around 1425 is where the next support for ICICI is placed. So if we go below 1425, it can go towards 1400 levels. So in fact it was really good, एक अच्छा breakout भी आ गया था, but there is absolutely no support from ICICI and HDFC Bank. One of the reason why our markets are also lagging behind. If you look at Titan, I feel there is some reversal that we are seeing in the last couple of days. But I feel important support would be 3,250, 3,260, because that is where the previous low is placed, or you can even consider 3,300 as support, considering the fact that there was this engulfing candle and we are seeing a strong follow-up move today. आई थिंक देर इज सेवेंथ को इसका रिजल्ट है यहाँ पे, सो आई थिंक टाइटन कैन बी वॉलेटाइल, बट आई फील 3,250 3,200 दैट इज अ लाइकली सपोर्ट लेवल फॉर टाइटन योर। तरुण जी इज आस्किंग फॉर LND REC लिमिटेड। REC एकदम ट्रेंड डाउन है तरुण जी, आई थिंक बेटर इसको अवॉइड करना है। एक लोअर हाई फॉर्मेशन में मूव कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 380 है, 380 के नीचे और आई थिंक 355 टेस्ट कर सकता है। बट ऑन दी अपसाइड वेट अंटिल हमें 410 420 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता, इट्स बेटर टू अवॉइड तरुण जी REC को। Yatat Q1 results are there. Yes, Paradeep, yeah, Paradeep is doing well. So Paradeep Phosphates देखे, so यहाँ पे breakout मिलने के बाद the price has gone up. I think if you're already holding, you can hold with a SL of 200, 202, because that is where this gap is placed. So 202 का SL से आप इसको definitely hold कर सकते हो. Sachin ji is asking for my view on Max Healthcare. Yeah, I remember you were going to short this, Sachin ji. But yeah, so Max Healthcare ये अच्छा है, ये जो previous resistance है वो एक support के तौर पर काम कर रहा है. So 1215 1220 एक strong support होगा. But I feel ये अगर 1280 के ऊपर जाता है तो हो सकता है हमें एटलीस्ट 1310 लेवल देखने को मिले शॉर्ट टर्म में. So this level of 1215 1220 is likely to act as a strong support. But we need a break about 1280. About 1280 we can see 1310 levels in the short term. सीजी पावर की बात करें तो थोड़ा सा काफी कंजेस्टेड है यहाँ पे। अगर हम सीजी पावर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एकदम छोटे छोटे नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। वेट आई सी थोड़ा सा 695 700 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। थोड़ा सा मोमेंटम आना बाकी है। आई कैन सी दैट RSI इज इम्प्रूविंग, ADX इज ऑल्सो इम्प्रूविंग हियर, बट थोड़ा सा अगर 695 700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, then we can consider this stock at that point. Dinesh ji is asking for Fortis Healthcare. Yeah, Fortis Healthcare is good. I think ये यहाँ पे ब्रेकआउट देख के रीटेस्ट मार के काफी ऊपर चला गया. It is moving in a higher high higher low formation above its key moving averages. ADX भी ऊपर की तरफ है. RSI थोड़ा सा flatten out हो रहा है. Avoid fresh entry now, considering the fact that it has already risen up. Dinesh ji, if you're already holding, you can hold with an SL of 830. That is where the 20-day EMA for the stock is placed. Vinay ji is asking for AB Capital. AB Capital की बात करें, इट्स गुड, अच्छा है. ये देखो, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है अब वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है. अराउंड 245 का एसएल या सपोर्ट लेके आप चल सकते हो AB कैपिटल में विनय जी. आई थिंक इसका एक रेजिस्टेंस है, इसका प्रीवियस हाई 282 के आसपास. अगर ये 282 के ऊपर जाता है तो और ऊपर जाने की संभावना है. अराउंड 245 का एसएल रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो AB कैपिटल. रविंद्रन जी, काइटेक्स का क्या फ्यूचर है? काइटेक्स, सी काइटेक्स अगर हम देखेंगे सो करंटली ये 200 डे EMA के नीचे आ गया. सो देयर इज प्रेशर इन काइटेक्स एट दिस पॉइंट.
सी थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी टाइम सर्किट भी लगा है ये स्टॉक में. सो आई वुड से ऐसे स्टॉक्स थोड़ा सा दूर रहना ही बेटर है. बट अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो अवॉइड करना, बिकॉज अगर आप आज भी देखोगे तो 5% का सर्किट लगा है. सो ये स्टॉक में काफी सर्किट लगते हैं. सो इट्स बेटर टू अवॉइड काइटेक्स बिकॉज ये करंट डाउन ट्रेंड में है. इसका नेक्स्ट सपोर्ट 192 में 192 ब्रेक करेगा तो ये 169 फॉलोड बाय 157 तक जा सकता है. फॉर अपसाइड के लिए इट नीड्स टू गो अबाउट 225. सो अनलेस एंड अंटिल वी डोंट गेट दैट, इट्स बेटर टू अवॉइड. थोड़ा सा ट्रेंड चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है रविंद्र जी यहाँ पे. टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें इट्स गुड. बट ये देखो आज ऊपर से एक काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी गई है. एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी नजर आ रहा है यहाँ पे. सो जब तक ये 7440 7450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, इट्स बेटर टू अवॉइड टाटा इन्वेस्टमेंट. टेस्टी बाइट्स, सी टेस्टी बाइट्स देखे तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है. थोड़ा सा ओवरऑल लाइक कंसोलिडेशन फेस में भी है. सो वेट अंटिल 11,915 के ऊपर वी कैन कंसिडर टेस्टी बाइट्स. एंड आई थिंक ऑन दी डाउन साइड 10,180 10,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है टेस्टी बाइट्स के लिए. अमित जी इज आस्किंग फॉर आजाद इंजीनियरिंग. आजाद इंजीनियरिंग थोड़ा सा ट्रेंड वीक लग रहा है यहाँ पे. आई फील जब तक हम 1600 के ऊपर नहीं जाते इट्स बेटर टू अवॉइड. अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 1510 का एक ऐसे लगा के आप होल्ड कर सकते हो. बिकॉज ये आज का गैप है, अगर वो गैप फिल होगा तो 1510 तक आ सकता है. सो जब तक 1600 के ऊपर नहीं जाता इट्स बेटर टू अवॉइड. अमित जी, Tata Tech downward momentum was the level for averaging bought at 750. See, Tata Tech, you bought it at 760. 760. Okay. Uh, See, very difficult to say if this can be a good level. I think इसका next important support 635, 640 levels के आसपास है. Because last time भी 640 से एक bounce back मिला था. So wait until I would say 635, 640. जब वो लेवल पे आएगा राकेश जी फिर से हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं. Sudhakar ji saying gems and jewelry should be affected by US tariffs. Yes, people once purchase at 25 cannot again sell at loss. Yeah, so that's right. So we'll have to wait until the final blueprint comes in, Sudhakar ji. I think ये कभी 25%, कभी 26%, कभी 30%. किस पे क्या लगेगा, किस पे कितना लगेगा, what is the exposure. So gems and jewelries है, pharma can take a hit. I think Avanti Feeds है, जो shrimps exports है, Gokaldas exports, Pokarna, all these stocks, auto components, we are good exporters of auto components as well. Gems and jewelries में, yes, I think Gokaldas gems and jewelries में आता है. I think Pokarna, Avanti Feeds, these are the stocks again. So we'll have to wait until what the final tariff is, because I think these tariffs keeps changing from time to time. So, and we'll have to look at the commentary given by the companies with respect to these sectors and stocks as well. Ki how are they perceiving it? Ki agla next 2 quarters, what is the impact are they looking at with the kind of tariffs that has been imposed on. So yes, gems and jewelries, pharma, auto components, uh, I think even shrimps, these are the sectors that can take a hit because of the US tariffs. But I think considering the fact that we can diversify to different markets, maybe we can move to Europe, we can maybe other Asian markets. I think that is something that that we'll come to know in the coming days. Tell one bottom down stock for fresh entry long term investment. Bottom down stock, it's very difficult, but अगर आप investment perspective से देख रहे हो, so I think not a bottom down stock, but Amber Enterprises is one stock that you can consider. I think even SBI Securities had recommended Amber Enterprises. So Amber Enterprises आप देख सकते हो. This is one good stock. At least take not from a very long term perspective, but at least take short to medium term perspective के लिए Amber Enterprises is one that can do well.
डिवीज लैब फॉर शॉर्ट, सचिन जी इज आस्किंग फॉर, थोड़ा सा रुक जाना डिवीज लैब में। आई थिंक ये 6300 के नीचे चला जाता है सचिन जी, आई थिंक देन एक अच्छा थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर वीक बन जाएगा। बिकॉज ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस आए, बट वही अगर 6300 के नीचे चला जाता है, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, देन आई फील कैन बी अ गुड शॉर्ट कैंडिडेट। Rakesh ji is asking for fresh entry level for steel exchange. Okay. Uh, राकेश जी अवॉइड करना, ये एक पेनी स्टॉक के ऊपर से 10 रुपए का स्टॉक है आपका। लग जाएगा तो लग जाएगा। इनफैक्ट आई मीन इन द वे कि अगर आपका इसमें लक अच्छा है, अगर आपका लक अच्छा लग जाए तो हो सकता है ये 10 का 20 हो जाए, बट आई फील इट्स बेटर टू अवॉइड सच स्टॉक्स राकेश जी। बट अगर एक्सपोजर कम है, आप ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो, तो इट्स बेटर, बिकॉज इसमें सब ऐसा डोंट पुट इन सम हेवी इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस इफ यू आर कंसिडरिंग स्टील एक्सचेंज। बट अगर आप एंट्री पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हो, तो अराउंड 11.2 11.3 ये जो प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर जाना चाहिए विद अराउंड 9.5 एक्टिंग एज अ सपोर्ट हियर। So I think my advice would be avoid steel exchange even for, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो भी इसको अवॉइड करना, बिकॉज आप कुछ बोल नहीं सकते हो पेनी स्टॉक्स का कि कब ये अंडर परफॉर्म करने लगे, and your capital will be stuck in such stocks here. So it's better to avoid such stocks, Rakesh ji. Uh, Vamsi ji is asking for Jubilant Pharma. Your entry price is 1158. Okay. So right now it is at 1128. Maybe you can consider 1050, 1055. As the support for this. थोड़ा सा 100 TMA के ऊपर, I think the previous high was around 1050, 1055. So you can consider that level as a stop loss. If you have the risk appetite to go even further, I think you can keep 1040 as a stop loss here. That is where the 200-day EMA is placed. So you can consider that level as a stop loss, Vamsi ji. ठीक है. Rajan ji is asking for DLF. See, the overall realty space is underperforming, राजन जी। अगर DLF ये 770 का की सपोर्ट है, अगर ये 770 टूटता है तो हो सकता है हमें एक एक्सटेंडेड सेलिंग प्रेशर दिखाई दे अंटिल एटलीस्ट 735 740 लेवल्स। थोड़ा सा रिवर्सल साइंस चाहिए हमें, एटलीस्ट 800 के ऊपर जाना चाहिए, इवन 800 805 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है, देन वी कैन कंसिडर ऑन द लॉन्ग साइड, बट अवॉइड डूइंग एनीथिंग नाउ इन DLF, बिकॉज अगर ये आई थिंक ये 770 के नीचे जाएगा तो थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एंड ऑल्सो रियलिटी स्पेस भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है रियलिटी स्पेस में। हाँ, सो इट्स बेटर टू अवॉइड एट दिस पॉइंट। maybe you can look at some auto sectors, because auto sectors में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है, and if you see the rest remaining sectors, I think almost all the sectors are looking weak, barring some pockets of metal and the auto space here. Clear? So 770 is the level. थोड़ा सा 800 805 के ऊपर जाना चाहिए DLF. I think once we get that, I think it will be a good sign. ठीक है. Any other doubts and queries? And also my colleague Gautam will be doing a webinar today at 4 o'clock. And I think do attend his webinar as well. I think it will be very informative. Sai ji is saying, I am Sai, I am Sudhakar's friend. Good to have you here, Sai ji. Looking forward to your presence in this mid-market webinars every day. So we do it every day from 12:30 to 1, ताकि आप मार्केट से अपडेटेड रहे. ठीक है. So my colleague Gautam will be doing a webinar today from 4 to 5 on SBI Securities YouTube channel, and you can definitely attend that and take some good knowledge from that session here. And as far as I'm concerned, I'll meet you again tomorrow, guys, at 12:30 again for the new mid-market session. Until then, take care, stay safe, happy trading. Don't be aggressively long in this markets, guys, until you get some good reversal signs. Vinay ji, yeah, I think मैंने कल schedule, I don't have the schedule with me, but I'll get the schedule tomorrow, Vinay ji. I think अगर मैं ये वीक का शेड्यूल बोल देता हूँ, आज एक वेबिनार है 4 to 5,
और फ्राइडे को एक वेबिनार होगा. आई विल बी डूइंग एन वेबिनार ऑन हार्मोनिक पैटर्न फ्रॉम 4 to 5 hours. So there is one happening today and there is one happening on Friday. So that's the webinar schedule for this week. ठीक है. Mahindra. Okay, Vamsi ji, I'll take one last question. So Mahindra, it's good. You can hold. It needs to go above 3,220, 3,250, Vamsi ji. Stop loss के लिए you can consider 3,050 as a stop loss for Mahindra and Mahindra here. It's positive. You can continue to hold, Vamsi ji. ठीक है. Bye guys. Take care. Do attend Gautam's webinar from 4 to 5. And I'll see you tomorrow at 12:30 for the mid-market session. Bye guys. Take care. Stay safe.